Assalamu alaikum. Today we are trying to explain logo designing to our viewers. As you can see on the screen, we have made two logos for the channel EDU Mind Official. Let's begin with how we made it. सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर Adobe Illustrator 2022 को ओपन करेंगे। उसके बाद किसी भी डिफ़ॉल्ट साइज के कैनवस को ओपन कर लेंगे। Then I am writing the logo's name, which is EDU Mind, और कैरेक्टर पैनल से इस टेक्स्ट का फॉन्ट और साइज सेलेक्ट कर लेंगे। Now from the top menu, we will select object and then in the expand tab, we will expand the text. उसके बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे एंड देन इसको अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे by selecting and grouping them with Ctrl plus G like I have done here. और अब कलर्स मेन्यू में जाकर हम अपने डिजायर्ड कलर सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर देंगे। Now open the symbol panel and attach the text into it like this and give it some name. उसके बाद हम यहाँ एक स्क्वायर ले लेंगे। मैंने यहाँ 300 by 300 पॉइंट्स का एक स्क्वायर लिया है। Now select the square from the top menu, go to the effects 3D and then select extrude and bevel और यहाँ से extrude depth अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करें। फिर इसी पैनल पर नीचे मैप आर्ट पर जाएंगे, वहाँ जाकर इनविजिबल ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने स्क्वायर की फ्रंट साइड को सिलेक्ट करके उसमें सिंबल के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाकर जो टेक्स्ट हमने सेव किए थे उन्हें वहाँ पेस्ट करेंगे लाइक आई एम डूइंग हेयर। And as you can see, we are almost done with the logo. Now all we have to do is to add the last name of the logo, and now I am going to add it. Select the font of your choice and add the kerning if you want. If you want to make changes in the logo, we can select the logo, then go to the appearance panel and select extrude and bevel. The first logo is ready. Let's now move on to the other one. For this logo, firstly rectangle tool select करेंगे and then इस शेप का एक रेक्टेंगल बना लेंगे और अब इसका फिल रिमूव करके स्ट्रोक को बढ़ा देंगे। लेफ्ट मेन्यू से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसकी एजेस को कुछ इस तरह से राउंड कर देंगे। अब एक सर्कल ड्रॉ करके उसकी एक कॉपी उसके नीचे लगा देंगे। And now select the shape builder tool and select all of the shape that we made and make a new shape out of them. And now we will duplicate it and then reflect the other one.
और अब पेन टूल से कुछ इस तरह के पाथ्स बना देंगे। Now select the Shape Builder tool and remove the excess lines. Now we add these little circles to our design. अब अपनी मर्जी के कलर्स अपने डिज़ाइन पर लगाकर स्ट्रोक को एडजस्ट करें। Our second logo is also done. So, today you saw how we made these two creative logos for this channel. That's it for today. Allah Hafiz.